बेल्जियम में आपने देखा था, you have studied in the Belgium that after 4 times constitution were amended, and after that the power were equal distributed between different ethnic groups, है ना. Or in the case of Sri Lanka, you had seen that श्रीलंका के केस में आपने देखा था कि power were given to the only Sinhala's community, and their language were given importance. So the situation was beyond out of control, and the result was civil war, है ना. आपने ये सब देखा था. But when you take the example of India, you will find that the power is divided here between the union government and the state government. So anyone, can you tell me that how the power is divided between union government and state governments? What provision has been made in our constitutions regarding this distribution of power? कोई भी बच्चा बताएगा कि पावर को इंडिया में कैसे डिवाइड किया गया है? ठीक है, कोई भी बोलो. देखो रिवीजन है, बहुत बार ये सब चीज तुम लोग पढ़ चुके हो. एनीवन? द कॉन्स्टिट्यूशन, या ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये मेंशन कर दिया गया है कि पावर को लेजिस्लेटिव पावर्स should be divided between union government and the state government by 3 lists. So what are the list? Yes, what are the list, students? क्या लिस्ट है? Union list, state list, and concurrent yes, list. Union list, state list, and concurrent list. So all the subject which are of national importance that are given, that subject are given to the in the union list. ठीक है, वैसे सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया है. जैसे कि हो गया रेलवे, हो गया टेलीग्राफ, हो गया फॉरेन अफेयर्स, हो गया करेंसी, हो गया बैंकिंग, हो गया, है ना. ठीक है, और ये कम्युनिकेशन हो गया. ये सारे मैटर्स दैट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दिस इज गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को ये दे दिया गया है, और इस तरह से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का डिवीजन कर दिया गया है. उसके बाद नेक्स्ट इज दैट सेकंड इज स्टेट लिस्ट, इन विच द पावर ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंस इज गिवन देयर, एंड लाइक पुलिस, like business, like commerce, agriculture, and irrigation. ठीक है, this matters is given to the state in the state in which state government is having power to make laws on that. Next is that here one thing is also mentioned, that in the case of extraordinary situation, in the case of extraordinary situation, union government is having power to make laws on the subject mentioned in the state list. Third is your concurrent list, in which you have studied that both the government has got the equal power to make laws on the subject mentioned in the concurrent list. And in this list there is marriage and divorce, adoption हो गया, then आगे आपका ये education हो गया, forest हो गया. Such type of matters come under this list, and both the government has got equal power to make laws on the subject mentioned on the concurrent list. But if the conflict arises between the union government and the state government, then which law will be acceptable? अगर concurrent list में बनाए गए subjects पर अगर कोई डिस्प्यूट उभर जाता है, कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, तो किसकी लॉ को माना जाएगा? एनीवन? यूनियन गवर्नमेंट के लॉ को माना जाएगा. एंड नेक्स्ट इज आफ्टर framing the constitution, some matters, some topic has been arisen with the passage of time, and that come under the decided subject on when the union government is having power to make laws on that subjects. Okay, so this is power and function, legislative power between the union and the state. This features so that India is a federal country because power has been clearly mentioned in the constitutions. ठीक है,
power has been clearly mentioned in the constitution. But if you'll take the example that some states in our country has got all the states in our country is not equally treated. ठीक है, सारे स्टेट जो है हमारे देश में इक्वली ट्रीटेड नहीं होता है. लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. पहले जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था. ठीक है, वहां पे कोई रह नहीं सकता था, वहां पे कोई जमीन नहीं खरीद सकता था. देयर वर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. एंड जो भी वहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजंस को एक्सेप्ट करने के लिए वहां के लेजिस्लेचर के द्वारा पास होना जरूरी था. तो दिस वाज रिस्ट्रिक्शन एंड दिस स्पेशल पोजीशन वाज गिवन टू द जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370. बट you have noticed that previous years मोदी सरकार है इस आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, एबोलिस्ट कर दिया गया एंड जम्मू कश्मीर को इक्वली ट्रीटेड किया गया जैसा कि बाकी स्टेट के साथ होता है. बट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सम स्टेट्स आर वेरी स्मॉल एंड दे वर नॉट इजी टू उसको किसी और के साथ मिलाना संभव नहीं था, उसको अलग अलग प्रांत का दर्जा दिया गया. तो ऐसे स्टेट को भी उनके छोटे साइज होने की वजह से उन्हें कुछ स्पेशल अधिकार दे दिए गए. तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर जिनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है. ठीक है, इसके अलावा आपको जो इसके फीचर्स पढ़ने हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं. अगर इसी फेडरलिज्म के फीचर्स पर आपको लिख सकते हो कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है. So these are the features of the key features of federalism. First is there are 2 or more levels of the government. इंडियन फेडरलिज्म में सबसे पहले 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए. जैसा कि अगर फिर टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, देयर आर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. तो 2 एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए. फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म है. सेकंड है डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizens, but each tier had its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration. ठीक है, different types of government govern the same citizens. Suppose if I'm the citizen of, if I'm living in Bihar, then government, we have to follow the decision taken by the union government and we have to follow the decision taken by the state governments. दोनों गवर्नमेंट के हमको डिसीजंस को फॉलो करने हैं. तो इस तरह से दोनों ही गवर्नमेंट सेम सिटीजन पर शासन करता है. ऐसा नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट का अलग सिटीजन्स है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग सिटीजन्स है. सारे सिटीजन्स जो है वो सारे लोग स्टेट के भी स्टेट के अंदर स्टेट के सिटीजन सब नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डबल सिटीजनशिप, देयर इज सिंगल सिटीजनशिप. तो हम लोग सब भारत के नागरिक है, लेकिन हम जिस स्टेट के अंदर रहते हैं उस स्टेट के रूल रेगुलेशन को भी हमको फॉलो करने हैं और साथ में हम यूनियन गवर्नमेंट के बनाए गए लॉज को भी हमें फॉलो करना होता है. तो कह रहे हैं कि दोनों ही गवर्नमेंट जो है दे रूल ऑन द सेम सिटीजन्स, बट इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब अपने लेजिस्लेशन के मामले में दोनों को अलग अलग अधिकार दिया गया. जैसे कि आप देख रहे हो कि यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ओवर सब्जेक्ट्स मेंशन इन द नेक्स्ट यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एंड रिसाइडेड सब्जेक्ट्स, but state government can make laws only on the subject mentioned in the state list and concurrent list. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि लेजिस्लेशन के मामले में टैक्सेशन, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, दोनों ही स्टेट का वेरी क्लियरली हैज बीन मेंशन एंड बोथ द गवर्नमेंट हैज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन. दे विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ ईच अदर. तो दिस इज द सेकंड फीचर. Third is the jurisdiction of respective level of tiers of government are specified in the constitutions. So the existence of authority of each tier of government is constitutionally granted because it has been clearly mentioned in the constitution that what is the job of union government and what is the work of central state government. So both the government will not interfere in the each other work.
दोनों ही गवर्नमेंट एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनके काम को बिल्कुल हमारे संविधान के द्वारा स्पेसिफाइड कर दिया गया है, बिल्कुल क्लियरली लिख दिया गया है। सो और इससे ये भी पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट हैज बीन गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये संविधान के अनुरूप है, संविधान के द्वारा एक गारंटी है। तो दिस इज द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, दैट वट एवर both the all the tastes of the governments has been specified in the constitution, and their existence of authority of each type of government is constitutionally granted. And next feature is that fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Whatever the fundamental provisions, जो बेसिक संविधान के बेसिक प्रावधान है, उसको यूनिलैटरली चेंज नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो वो चेंज नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए it should be passed by the special majority and ratification. आप जानते हो कि संविधान का जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, उसमें थर्ड हमारा प्रोसीजर यही कहता है कि कोई भी बेसिक फंडामेंटल के बेसिक रूल्स को या बेसिक फंडामेंटल प्रोविजंस को तभी चेंज किया जाएगा जबकि उसे 2/3 मेजोरिटी से मिल जाए, या टोटल मेंबर्स के एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसे दे दिया जाए, उसे पास हो जाए, या टोटल मेंबर्स का 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव हो जाए, तो वो स्पेशल मेजोरिटी होगा। और रेटिफिकेशन का मतलब है कम से कम टोटल स्टेट का 50% स्टेट उस पर अपना अप्रूवल दे दे। ठीक है, तब जाकर के संविधान के प्रोसीजर को अमेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे यूनिलैटरली यानी अकेले यूनियन गवर्नमेंट कांट चेंज द बेसिक प्रोविजन, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए उसे स्टेट से कंसेंट लेना ही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि स्टेट लेवल को भी पावर दे दिया गया है, और कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करने का काम कोर्ट को दे दिया गया है। और आप जानते हो कि इन दोनों ही सुप्रीम कोर्ट, highest court act as an umpire and dispute arises between the different level of government in the exercises of their respective powers. ठीक है, और साथ में अगर दोनों के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट अराइजेस होता है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स जो होता है वो डायरेक्ट कोर्ट में जाता है। यू हैव स्टडीड दैट अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस, अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सच टाइप का मैटर अराइजेस फर्स्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सबसे पहले, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसको कहते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो मामले जाते हैं, सबसे फर्स्ट जो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट से जो डिस्प्यूट्स होता है, उनके बीच जो डिस्प्यूट्स है, वो मामले सबसे पहले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाईएस्ट कोर्ट, यू कैन से दैट इज वर्क लाइक एम्पायर if dispute arises between the union government and the state government. Next is sources of revenue for each level of governments are clearly specified to ensure its financial autonomy. तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए यानी वित्तीय स्वायत्तता के लिए बिल्कुल ही ये क्लियर लिख दिया गया है, बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा और स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा। तो these are the features, and last feature is that federal system thus has dual objective. Federal system thus has dual objective to safeguard and promote the unity of the country. फेडरलिज्म का पर्पस क्या है? दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो है कि वो अपने देश की एकता को बना के रखे, देश की रक्षा करे, and while at the same time accommodate regional diversity, और रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करे। मीन्स जो डिफरेंसेस है रीजन के नाम पर, वो डिफरेंसेस नहीं हो और लोग जो है सारे लोग मिलके रहे। और गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट it would abide by is part of agreement। ठीक है, गवर्नमेंट जो डिफरेंट लेवल से पे जो गवर्नमेंट है, उन्हें भी चाहिए कि वो
वो दो चीज को माने, एक है म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट करे, और दूसरा है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहने का एग्रीमेंट। बच्चों इस पर मेरे पास एक वीडियो है फेडरलिज्म पर, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। वुड यू लाइक टू सी दैट? फर्स्ट टू टेल मी, फेडरलिज्म पे मेरे पास एक वीडियो है, जस्ट आई वांट टू शो यू, यू आर इंटरेस्टेड टू सी दैट और नॉट, बिकॉज यू आर लिविंग द क्लास। Yes. और कुछ हरकत भी नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है? जस्ट आई वांट टू शेयर दैट, because it make you the points very clear, so I'm interested to show you this. 1 minute. Understand by this, it means it has only central government, 1 which minute. is supreme. The federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and various constituent units of the country. Now, what do we mean by this? We understand that the power is divided between the central government and the state government or local governments. That is the various constituent units of the country. Both these levels of government enjoy their power independent of each other. Federalism basically has two systems, and one is the unitary system and the second one is the federal systems. In a unitary system, there is only one level of government. What do we understand by this? It means it has only central government, which is supreme. The central government may create administrative divisions, and such units exercise only the powers that the central government has chosen to delegate. Then on the other hand, we have federal system, where we have more than one level of government. As we have seen, it can be central government, it can be state government, it can be local government. Here, in the unitary system, the central government can order local governments. But on the other hand, the central government does not order the local governments. So, what do we understand? In the unitary system, there is no power to local governments. Local governments will just do the work that is delegated by the central government. State government have their own power. In a unitary system, all the other local governments are answerable to central government. But here, the state government is not answerable to the central government. On the other hand, both are answerable. Both means here the state as well as central are answerable to the people of the country. Yes, so students, so there is a difference between unitary system and federal system. Unitary system, there is only one level of government. Central government can order local government and no power to local government. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है, एंड लोकल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट इन फेडरल सिस्टम मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो दो लेवल हो गया, 3 लेवल हो गया, तो मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट ऑर्डर द लोकल गवर्नमेंट. Yes, union government can't order to state government to do that, do according to it, and state government have their own power. ठीक है, state government have their own power. They are free to take decisions, and state government is not answerable to the central government. Both are answerable to the people because people choose them. People choose the MPs and MLAs. तो यहाँ पे दोनों किसके लिए आंसरेबल है? पब्लिक के लिए. ठीक है, पीपल के लिए. So these are the differences between unitary system and federal system. Now, if you see the world map, you will come to know the countries that are following unitary system and the countries that are following the federal. Moving ahead, what are the key features of federalism? There are 2 or more levels of government. When I say levels of government, they are central, then there is state, and then there is local governments, and we shall learn about them in detail as we proceed in this chapter. Now, different government govern the same citizens, but each tier has its
own jurisdiction. When I say jurisdiction, it refers to their area where they can exercise their power. Supposing I live in Mumbai. Okay, I am under the jurisdiction of, first of all, central government, because Mumbai is a part of India. Then it is state government, because Mumbai is a part of the state of Maharashtra. Now, the jurisdiction of the respective levels of government are specified in the constitution. When I say constitution, I am referring to the rule book of the country. Can we bring any changes in what is specified in the constitution? The answer is the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. When I say unilaterally means one person or one group or country involved in a situation without the agreement of the others cannot change. On the other hand, we have the highest court which acts as an umpire if there are disputes that arise between different levels of government. Say if there is a dispute between the state government and the central government, then the matter will go to the Supreme Court. If there is a dispute between Maharashtra and Karnataka, then again it will go to the Supreme Court. If there is a dispute between, say, Karnataka and Tamil Nadu, again it will go to the Supreme Court. So, any disputes between the states or states on one side and the central government on the other side, then the matter will go to the highest court, and that is the Supreme Court in India. Now, in this way, the Constitution ensures its financial autonomy to all levels of government. When I say financial autonomy, it is financial independence. And this is ensured in the Constitution, that is the rule book of the country. In a federal system, the good thing is it safeguards and promotes unity. And second one is it also accommodates regional diversity. Because when I see India, there is diversity in many ways, whether it is language, whether it is religion, whether it is customs and festivals. Now, there are two routes to form federalism. Okay, the first one is coming together. What do we mean by coming together? The states come together on their own to form a bigger unit, like it has happened in United States of America. Initially, it was 13 British colonies, but today, if you take, it is 50 big states, and these states have come together to form a bigger unit. Now, what is the benefit? They retain their identity and sovereignty. It means all the 50 states, they retain their identity as well as sovereignty. Sovereignty is the supreme authority. But if I take a country like India, which has 28 states, different states have different powers. The states do not have sovereignty, but the country has sovereignty. Means some other country cannot interfere in our political and internal matters. Then all the states in this type of federalism has equal powers. So one of the country is United States of America with 50 states. Then it is Switzerland with 26 states and Australia with 6. Then it is holding together. This is the second route to form federalism, in which India is also a part. Now, in this system, a country divides its power between the constituent states and the national government. National government here means central government. The central government tends to be more powerful than the state government. Different constituent units of the federation have unequal powers. Means different states here have unequal powers. That means, say India. India is made up of states and union territories. Different states and different union territories have unequal powers. The countries which have this form of federalism,
is one, of course, India, Spain, Belgium. These are the classic examples of federalism formed by holding together. Now, what makes India a federal